नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। Okay, so hello. So let's start today with some basics of ear anatomy, and then we'll discuss the remaining 5 elements. Good afternoon. Good afternoon. Okay, sir. Okay, so far हमने क्या देखा था? Basic relationships of TCM concepts, right? Yin yang और उसका relation, and there are few points जो आपके एक specific character को, जैसे कि heat है, cold है, उसको आप address कर सकते हो, right? Secondly हमने देखा 5 elements और उसके accordingly कुछ specific points that can balance that element, along with of course other point combination. So I would like to mention कि आपको कोई भी point एक as a single point जैसे काम करेगा, वैसे वो combination में नहीं करेगा. In the combination it will work differently. ठीक है? कोई भी एक specific point है, जैसे कि heart. So heart point alone will work differently than a hard point in combination. एक बार एनाटॉमी का बेसिक देख ले, बाद में हम ये कुछ डिस्कस करेंगे. ओके, सो ये हमारा ईयर है. अभी हम जब पॉइंट्स उसको प्लॉट करेंगे ईयर में, तब हमें पता होना चाहिए कि कौन से एरिया में कौन से पॉइंट्स है. वी शुड नो दैट विच एरिया हैज विच पॉइंट्स एंड दीज पॉइंट्स करस्पॉन्ड टू व्हाट बॉडी पार्ट. ठीक है? First of all, what we do is generally ये picture में दिखाता हूँ. This is the ear and body correspondence. That shows you that human body is inverted fetus on the ear, and we get the points according to this picture. ठीक है? So lobe area and just above the lobe area is the face and the skull in the brain. Then this inverted C-shape area is called as antihelix. This is the spinal correspondence. This area is called as Scapha. It is the hand correspondence. Then just observe the picture. Just observe the picture and tell me if you have any questions. Tell me if you find something not correct or something not right or missing or anything that is off. You can message in the group. Just by observing the picture, tell me if you find something that is not right. ऐसा कुछ है तो बताइए. अगर आपको लगता है कि इस पिक्चर में कुछ सही नहीं है, my friends who already have learned, आप नहीं बताएंगे. ठीक है?
परमिशन फॉर द माइक, ओके। जो पहले से सीख चुके हैं वो नहीं बताएंगे। हाँ सर, एक्चुअली आप जो, हाँ, ये पिक्चर में आप बताए सर, ऑर्गन्स का पोजीशन फॉरवर्ड स्काफॉइड फोसा में आ रहा है ना, फिर ऑर्गन्स का पोजीशन स्काफॉइड का फोसा में नीचे में आता है ना, ये कैसे कोरिलेट कर सकते हैं सर? नहीं, नो। ओके, और कुछ? और कुछ? Anyone else? You can unmute yourself. Let's have a discussion. जब मैंने ये पिक्चर देखा था मुझे बहुत सवाल थे. I had many questions. Why so? Why is that? The organs are shown at multiple positions differently. Right. Number one is correct. I need to see the image again, sir. Okay, take your time. Take your time, because this is a good fundamental question, and that if you have questions, you will get answers, right? जिन लोगों को बहुत सवाल होते हैं, they get answers. जिनको सवाल बहुत कम होते हैं, they are okay with what they get. Just observe and tell me what is wrong with the picture. No one? Okay, now my friends who are present in the lecture and who have already learned ear acupressure or auriculotherapy, it is your chance. Tell me what is wrong with the picture. Not wrong in the sense, but what is not aligning, what is not obvious. कोई बताएगा? No? Sir, I think organs are there. Afreen Jahan, very good. You got the answer. क्या कहा आपने? Sir, I think organs are not there. Organs are not there. Correct. That is correct. But that is not the answer. What is there? Afreen has given a good answer. Now see, you can see one head, you can see one eye, right? You can see one shoulder, one hand, but two legs. Isn't it something odd? Yes, sir. Yes. अगर दो Upper body is half upper body is shown. Sorry? Half of upper body is shown. Half of the body is shown, One. correct? Then why two legs? Right? Yes, sir. Yes, sir. That is the question. If the two legs are correct, then why only one hand? Hannah? Yes. Okay, so any guesses what might be the answer? Yes, Sunita, you're correct. Sunita ji ने सवाल का जवाब दे दिया है. It is a combination map of Chinese and French. Okay. See this. If you read the names of the areas like this one, Ni.C, C for Chinese map. C. Video. Now I turn off the mics. If you see the knee, it is for Chinese, and other knee is for E for European. Knee.E, hip.E, heel.E. कल किसी ने पूछा था कि heel के पॉइंट्स कौन से होंगे, तो you get the points here. Toes.E. Right? So यहाँ पे दो correspondences of leg बताए गए, two correspondences of leg. But one is European, one is Chinese.
So when we learn, I tell that learn one method at a time. So if you're learning the Chinese method, just ignore the French one. इसको भूल जाओ आप, ठीक है? So this becomes your body ear correspondence map. मतलब बॉडी के पॉइंट्स ईयर में कहाँ दिख सकते हैं. How the body area and points would be represented in the ear is the map. Okay, this is very important map. When I take the class, I for this I'm so sorry. There is again a electricity issue. So we'll wait for 5 minutes. Let's see if it comes up. Okay. I'll find out if I can get the picture. Give me a minute. ओके, क्या मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है? Can you see the ear picture? प्लीज मैसेज नहीं, मुझे समझ में शायद नहीं आ रहा है. Can you see the ear picture? Okay, fine. So we have to study this ear and we have to understand and mug up the names of the ear anatomy. ये ईयर की एनाटॉमी है, उसको हमें रटना है और इसको रटने के लिए एक ही ऑप्शन है, इसको देखो और उसके नाम को याद रखो. देयर इज नो अदर ऑप्शन. ओके, सो फर्स्टली I'll see if I have an option to okay.
दिस एरिया, ये दिख रहा है क्या? ओके ओके, मतलब आई एम ड्रॉइंग द ईयर विथ सम कलर्स, तो ये दिख रहा है। ओके फैंटास्टिक, चलो आई गॉट अ न्यू वे टू टीच व्हेन देयर इज नो लाइट्स। ओके, सो दिस एरिया इज हेलिक्स। इफ यू हैव पेन एंड पेपर प्लीज राइट डाउन, क्योंकि हम सिर्फ एनाटॉमी सीखेंगे तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। सो आई विल बी टेलिंग द बेसिक I'll be telling the basic uses of the particular areas. So helix is very important area and often ignored while teaching. Helix है ऐसा एरिया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत बार इग्नोर्ड है. People don't pay attention to helix and it is one of the most important area for 2-3 things. First thing, helix is the area which controls or which helps for the blood circulation. Number 1, for the blood circulation. Number 2, for the nerve connections of the particular part of the body. एक बार फिर बताऊंगा, हेलिक्स ऐसा एरिया है जो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन एंड नर्व सर्कुलेशन अच्छा रहे, ठीक रहे, इसके लिए मदद करता है. Acupressure on the helix area helps for better blood supply, helps for better nerve supply to the particular part of the body. ये clear? Is it clear? Okay. So helix एक ऐसा पार्ट है जो आपको बहुत सारे हीलिंग्स में काम आएगा. ठीक, अगेन आई विल शो यू. हेलिक्स कहां से कहां तक है? हेलिक्स स्टार्ट्स from the root of the middle part of the ear and it goes till downwards. आपका होमवर्क ये है, those who are really willing to study ear acupressure with expertise, आपको इसको ह्यूमन ईयर पे मार्क करना है. You have to mark it on someone, your family, friend, बेटा बेटी, माँ बाप, दादा दादी, एनीवन. आपको स्केच पेन लेना है और इसको ड्रॉ करना है. ड्रॉ करके आप इसकी फोटो भेजेंगे ग्रुप में. ओके, आई विल बी चेकिंग द फोटोज. ठीक, आप इसके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो इफ यू वांट. तो जैसा हेलिक्स है, वी हैव एंटी हेलिक्स. एंटी हेलिक्स इज अ वाई शेप एरिया. ठीक है, एंटी हेलिक्स इज अ वाई शेप एरिया. Antihelix is a Y-shaped area. Can you see the red helix and green antihelix? इसके मैं क्लियर फोटो भी ग्रुप में भेजूंगा. ओके, फैंटास्टिक. चलो. So these two are easy to remember, helix, antihelix. है ना? So helix is like C shape and antihelix is like Y shape. Helix, antihelix. Two areas to remember. Easy. Everyone should remember that. ठीक है, इसको मैं थोड़ा बेटर ड्रॉ करता हूं. ठीक है, so this is helix, antihelix. Now the area between helix and antihelix जो आपको दिख रहा है वो है स्काफा. The area between a helix and antihelix.
स्काफा, येलो कलर से मैंने दिखाया है, दैट इज कॉल्ड एज स्काफा, 3 एरियाज। तो जैसे आप हेलिक्स मार्क करोगे, एंटी हेलिक्स मार्क करोगे, इन बिटवीन एरिया अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। वंस यू मार्क हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, द एरिया इन बिटवीन automatically get highlighted. Now coming to the functions. Antihelix represents your spine and legs. Write down if you want. Antihelix is equal to spinal column and legs. Now if you check, the acupressure and acupuncture therapist get highest patients of pain, right? उनके प्रैक्टिस में जो भी उनका प्रैक्टिस है, मोस्टली they get pain patients more. So this antihelix Y shape is very important because this will give you relief in the pain by applying seeds or needles, by stimulating through laser or electrical device, whatever means you are using on this Y shape antihelix. ठीक है? So helix, antihelix, and in between is scapha. Scapha is what? Scapha is your hand correspondence. तो आपको हाथ के जो एरिया है, हैंड एरिया, उसके पॉइंट्स यहाँ पे मिलते हैं, एंड दे आर वेरी यूजफुल फॉर प्रॉब्लम्स लाइक फ्रोजन शोल्डर, cervical inflammation causing pain in the hands, tennis elbow, wrist problems, carpal tunnel syndrome. इसमें बहुत ज्यादा ये स्काफा एरिया काम। वाई शेप में जो एंटी हेलिक्स है वो आपके सारे सर्वाइकल, लंबर, स्पाइन इश्यूज में काम आता है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, मैंने लास्ट लेक्चर या लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था, ईयर मसाज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल। नाउ यू कैन रिलेट टू इट। क्यों? व्हेन यू मसाज, हेलिक्स है, स्काफा है, एंटी हेलिक्स है, व्हेन यू मसाज दीज एरियाज, you are massaging the correspondences of your entire spine, your hands and legs, and that is where we feel drained out. हाथ में पेन होता है, पैर में पेन होता है, नेक में होता है, लंबर कमर में होता है, बटक्स में होता है, राइट? सो समवन से कि यार मैं थक गया हूं, एंड इफ आई आस्क कि थका मतलब क्या है, आर यू हैविंग पेन, आर यू हैविंग एनीथिंग एल्स, सो दे डिनोट कि आई हैव अ पेन इन माई लेग्स, मैंने बहुत खड़े रह के बहुत काम किया, अभी थक रहा हूं, खड़ा रहना पॉसिबल नहीं। अदरवाइज दे से आई एम एग्जॉस्टेड मेंटली, राइट? सो मेंटली exhaustion can be helped by simple massage on the lobe. So what is lobe? What is lobe? Lobe is the soft area where earrings are wear. ऐसा सॉफ्ट एरिया जहां पे इयरिंग पहने जाते हैं। जब हमारे यहाँ पे भारत में जब किसी को टीचर पनिशमेंट करते तो क्या कहते हैं? कान पकड़ो। तो कान कहाँ पकड़ने को कहते हैं? हेलिक्स पे पकड़ने को कहते हैं, एंटी हेलिक्स पे, स्काफा पे या लोब पे। जब हमें बताते हैं कि कान पकड़ो एज एन पनिशमेंट इन द स्कूल, कहाँ पकड़ने के लिए कहते हैं? लोब, राइट? व्हाई लोब? नाउ यू गाइस टेल मी, क्यों ऊपर क्यों नहीं पकड़ने को कहते? व्हाई द लोब इज बीइंग पिंच्ड एज अ punishment thing, and since how long this method has been practiced? हमें किया है, हमारे माँ बाप को किया होगा, उनके माँ बाप को किया होगा, उससे पहले किया होगा, उससे पहले किया होगा, उससे पहले किया होगा। हाउ मेनी जनरेशंस? सो डू यू थिंक इट इज अ कोइंसिडेंस कि बस पता नहीं कहाँ पे पकड़ना है, कान के लोब को ही पकड़ो? ऐसा किसी टीचर ने एक दिन इन्वेंट किया कि नहीं, पनिशमेंट है तो लोब को ही करना है, बाकी नहीं?
ऐसा है? I don't think so. I think our country, our knowledge, we knew that this lobe is very important. This lobe is very important for the activation of brain. And for that activation, stimulation to the brain is required, and by the punishment of pinching or holding the lobe gives you the stimulation required and helps your brain to remember and understand not to do the mistake again or not to do the same mistake again. लोब को पकड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रेन को स्टिमुलेशन जाता है, मेरे ख्याल से मोटिव इज कि वो गलती फिर से ना हो, इसलिए हम पनिशमेंट के माध्यम से ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हैं. Isn't it fascinating? And now this is not the only theory. If you Google super brain yoga, go to Google and search super brain yoga, आपको क्या मिलेगा पता है? राइट हैंड से लेफ्ट लोब पिंच करो, लेफ्ट हैंड से राइट लोब पिंच करो और उठक बैठक निकालो. डू स्क्वाट्स by pinching left lobe with right hand and right lobe with left hand and do squats. Do you know what research shows? It shows that it activates the parts of the brain when you cross pinch your lobes. And we have been doing it for long, for generations. So this knowledge must have been there, just we did not know, right? Okay, so what I'll do is, one minute, I'll see if I can. Okay, so इसमें कोई सवाल? Any questions in this? No? किसी को सवाल पूछने हैं तो I can unmute, allow you to unmute. I think from my smartphone, I'm not able to allow you to mute or unmute. Okay. So I cannot give a permission to unmute right now. So if you have questions, you can type in, please. कुछ सवाल हो गए तो पूछिएगा. Okay. Otherwise, we'll see the other parts. Any questions? Do you understand till now? If yes, आपके पास एक thumbs up का option है. Raise your thumb. Okay. Fine. Fine. Okay. Shall we go ahead? Okay. Now, on the lobe, if you see on the lobe, this is the lobe area. And on the lobe, we have a correspondence for the brain as well as face. Okay. On the lobe and the upper part of the lobe, this is the two areas
which we haven't learned names of. See, the right side where I have written T is called as triangle. And triangle से ऐसा part है जो triangular या rectangular होता है and that is connected to the face. So everyone take your right hand. आपका right hand ले लो और index finger जो है आपका आपके triangle पे रखो. Triangle ऐसा part है जो triangular या rectangular है और आपके face को connected है. ठीक है. यू कैन पिंच दैट. अभी आप इंडेक्स फिंगर थंब ले लो और ये ट्राइगल्स को पकड़ो और इसको पिंच करो, मूव करो. तो आपको समझ में आएगा कि ट्राइगल्स अलोन इज मूविंग, नॉट द एंटायर ईयर. ये ट्राइगल जो पार्ट है फेस को कनेक्टेड है ना, तो सिर्फ ये मूव करेगा, बाकी का कान इसके साथ में मूव नहीं करेगा. ओनली ट्राइगल्स विल मूव, अदर पार्ट ऑफ द ईयर विल नॉट मूव. ठीक है. Now, everyone pinch your lobe, which is a very soft and nice part. जहाँ पे earring पहनते हैं ना वो लोग है. So everyone pinch your lobe. Every day we have to pinch our lobe, massage our lobe. Massaging the ear for good 5 to 10 minutes is just like massaging your whole body. There are researches that show that by massaging your ear, you are actually increasing the body energy and circulation of blood through the entire body. ऐसे research है. So if you massage your lobes every day, 3 positive uses will happen. First, you feel relaxed. If you massage your lobe better the entire year every day with some, say, coconut oil or ghee, you will feel your body is much relaxed. Number one. Number two, your sleep pattern will be much better. If you do it in the evening, आपको अच्छी गहरी नींद आएगी. You will have a deep sleep. Your sleep will not be broken or will not be disturbed by some small obstacles. किसी की आवाज आ गई, कहीं कुछ हो गया, तो अगर आप नींद से जगते हो, आपकी नींद बहुत इजीली डिस्टर्ब हो सकती है. तो इस मेथड से आपको डीप स्लीप आएगी. एंड नंबर 3, आपकी मेमोरी और आपके सेंस ऑर्गन्स, मतलब आंखें, कान, इसकी पावर धीरे धीरे बढ़ेगी. इट विल हेल्प यू टू एनहांस द पावर ऑफ योर सेंस ऑर्गन्स एंड मेमोरी. ठीक है. सो लोब इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अबव द लोब, राइट साइड में T for tragus and just above the lobe 80 for antitragus. These two are rectangular areas, and we are going to see lobe और antitragus मिलके क्या होता है. Are you ready? We have to see lobe and antitragus से क्या बनता है. Okay. Sorry, I have a kind of drawing that one can see that I should be punished. So this is, I'm not sure, but this is a human skull. Okay, this is a human skull. और इसमें आपको एंटी ट्राइगस पे, ये जो एंटी ट्राइगस है
वहां पे आपको इस एरिया में आपको स्कल मतलब ब्रेन और उसके ऊपर जो बोनी पार्ट है उसके पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। और नीचे के एरिया में आपको फेस के पॉइंट मिलेंगे। सो अपर पार्ट इज स्कल एंड ब्रेन एंड लोअर पार्ट विच इज एक्चुअली अ सॉफ्ट लोब एरिया एज अ पॉइंट फॉर फेस। ओके, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या डिस्टर्ब है? इज माई वॉइस क्लियर? ठीक है, ओके। डिस्टर्ब है, ओके, आई एम सो सॉरी बिकॉज आई एम यूजिंग 5G, आई डोंट नो। ओके, सो आई ट्राई टू टॉक अगेन, ठीक है। देखिए, ये जो एरिया है लोब, दैट इज योर फेस एंड चेंज कलर। अपर पार्ट जो है, सॉरी, this area is lobe and this area is skull। तो दोनों मिला के लोब में जो ब्लू कलर का एरिया है दैट इज द एरिया फॉर द फेस एंड ग्रीन कलर एरिया इज द एरिया फॉर द स्कल एंड ब्रेन। सो अभी तक क्या हमने देखा, स्कल एंड ब्रेन ये हो गया। उसके बाद में वाई शेप का एंटी हेलिक्स, दैट इज द स्पाइन एंड लेग्स। उसके बाद में हेलिक्स, that is the blood and nerve supply, and in between is what? Scapha. Scapha is the correspondence for shoulder, elbow, wrist, hand, fingers, right? Correct? So far so good? Okay, now practically how you can use this points. Any idea? Any idea? Fine. So let's see the tragus correspondence. एक बार tragus देखते हैं फिर थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये जो tragus है it has some points for ear and nose. So इसमें क्या पॉइंट्स है? कान के, मतलब कान में कुछ प्रॉब्लम है तो कान का पॉइंट कहाँ आएगा? तो ये आएगा ट्राइगस में। और दूसरे पॉइंट्स क्या है? नोज के लिए पॉइंट्स है। और इस एरिया का नाम क्या है? ट्राइगस, TRAGUS, ठीक है। सो दिस एरिया हैज सम स्ट्रक्चरल पॉइंट्स एंड सेवरल फंक्शनल पॉइंट्स। अभी ये क्या है? कान में ना आपको दो टाइप के पॉइंट्स मिलेंगे। Dominantly 70% point will be the point that denotes a structure in the body. Okay. ऐसे पॉइंट जो आपके बॉडी का कोई ना कोई पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, शोल्डर को, नेक को, हाथ को, स्टमक को, लिवर को। एंड सेकंड टाइप ऑफ पॉइंट्स आर फंक्शनल पॉइंट्स वेयर वी हैव द पॉइंट दैट हेल्प्स सेवरल फंक्शंस। ओके, सो ट्राइगस पे ना हमें 3 या 4 ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं, दे आर फंक्शनल पॉइंट्स। वन इज द पॉइंट फॉर सपोर्टिंग हार्ट, हृदय।
हार्ट के सपोर्ट का एक पॉइंट मिलता है, 1 पॉइंट फॉर हंगर रेगुलेशन, भूख रेगुलेट करना, 1 पॉइंट फॉर थर्स्ट रेगुलेशन, प्यास को रेगुलेट करना, एंड 1 पॉइंट फॉर फीवर। ओके, सो ऐसे पॉइंट्स, फंक्शनल पॉइंट्स हमें मिलते हैं जो कोई स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करते, बट दे रिप्रेजेंट फंक्शन। And in European methods, there are so many functional points, and they affect the function according to modern anatomy, modern physiology. Okay, so many times if you go and read a book on auriculotherapy, and if the book is teaching you the mixed method कि ये भी points है, वो भी points है, it becomes very difficult because वो concept हम correlate नहीं कर पाते. That's why first always learn the Chinese perspective of auriculotherapy, and if you want to go further, then go for the European methods. That is what I teach. Okay, so the tragus will represent what? Ear and nose. So what I say now, quickly, which part of the body we have covered? Message. Let's see who does the message fast. Okay. Correct. Okay. Okay. Right. Okay. Now, very good. Very good. Very good. Now I have to tell you that these points really work well. Yes. Jayashri ji, very good. Structural and functional. These are the 2 points which are very characteristically different, which we learn. तो ऐसे पॉइंट्स है जो बॉडी को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे पॉइंट्स है जो फंक्शन को करेंगे. ठीक है. व्हाट मोर फंक्शनल पॉइंट्स वी हैव कवर्ड इन लास्ट 2-3 लेक्चर्स? कोई बताएगा? Which more functional points we have covered in yesterday or day before yesterday or first lecture? Sympathetic. Okay. Okay. Endocrine. Okay, endocrine हमने cover हाँ किया था. Correct. Right. Good, good, good. Correct. Point 0, sympathetic, Steinman, endocrine. Correct. Correct. Yes. So ये जो points है ना, इसके बारे में हम ear apex, ये point के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक जब हम एक एक एरिया कवर करेंगे, वी विल बी कवरिंग द पॉइंट्स, वी विल बी कवरिंग द डिटेल्स ऑफ functions of each point and its connection in terms of say yin yang TCM, is in terms of connection of a function. जैसे कि for example mouth. So those who are acupuncturist, acupressure, TCM acupressure therapist, mouth is represented by which element and which organ? Right. Right.
Which element? Earth. Very good. Very good. Right? Stomach, spleen, earth. इसका कोई तो combination होगा, right? So when a mouth point is used, it helps to reduce the symptoms of stomach heat. So if you have your diagnosis as stomach heat, or in terms of modern diagnosis, that a person is having extra acid secretions, food is not getting digested well, sleep is not better, then the mouth point helps to reduce the stomach heat symptoms. ठीक है? Then we have the organ points, जो हम कल कवर करेंगे. Points for the organs, and उसके functions तो कल नहीं कवर होंगे, वो तो next week के क्लास में ही कवर होंगे. But I'll show the organ points, and these are very useful in treating a person with symptoms, or if you are an acupuncture therapist, तो आपके पैटर्न को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा काम आएंगे. जैसे कि किसी का स्प्लीन ची डिफिशियंसी ऐसा डायग्नोसिस है, तो आपको ईयर में बहुत अच्छा ये स्प्लीन ची डिफिशियंसी का कवरेज मिल सकता है. ओके. Any questions? Otherwise, I'll try to cover other 2 points. Any questions? No? Okay. So let me now take Concha. So mouth point can be used for treating hyper-talkative case. Hyper-talkative का मतलब? What do you mean by hyper-talkative? Please repeat at face and skull. Okay, let's see. My voice was cracking. Okay. Face and skull. Done. Okay. Okay. So here is the simpler form of simple picture. Okay. So that I can draw some points here easily. Okay. So this is your lobe. And this is the face, skull. I'm sorry, I am my drawing. I never got good marks in my drawing competitions or drawing exams.
So this area, tragus, represents the face and skull. Okay, now what remains is, okay, this is better. What remains is two parts called as concha. This is the lower concha and this part is upper concha. Okay, green, blue one is lower concha and maroon one is upper concha. Okay, these areas represent your organs. These areas represent your chest, abdomen and lower abdomen. ठीक है, details इसके in actual point by point जब हम सीखेंगे तो I'll be telling exact details, exact how. No screen? Oh shit. Oh shit. 1 minute. I'm sorry there. Now it is visible. Okay, thank you. Thank you. Okay, so let me repeat. It is better if I repeat. Okay. So this is your lobe. Above the lobe, this area represents skull. Okay. Now, these two areas represent your organs. Everyone, take your small finger. Right hand के small finger ले लो and just with a small finger palpate your lobe. खुद का lobe palpate करो, soft area. Go upwards and palpate the upper part, that is antitragus, जहाँ पे आपका skull है. Skull parts, skull or brain parts. Now you land. Once you go more up, you land inside. आप कान के अंदर के पोर्शन में लैंड करोगे. Where you land is this area. जहां पे आप लैंड करोगे ये एरिया मिलेगा. राइट, ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया. दैट इज योर लोअर कॉन्चा. कॉन्चा ये एरिया ऐसा है जो आपके ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करेगा. सो द ग्रीन एरिया रिप्रेजेंट्स योर चेस्ट एंड लंग्स. ओके, और आप उसी फिंगर को थोड़ा ऊपर ले जाओगे तो आपको एक नैरो वैली मिलेगा, नैरो गली जैसा. So that is represented by this blue area. That is called as lower concha, and that has your abdomen and lower abdomen organs. And they are very tricky points. You have to learn very precisely, but they are very helpful. So these two areas have all the organ points, 12 Zhang Fu organ points. So those who are using ear acupressure, body acupressure, acupuncture, this is very helpful. Those who are learning new, you just can relate it to body organs. जैसे कि heart, lungs, actually heart, lungs. Liver, actual liver. Because liver point in the ear actually helps for the liver problems. Kidney point in the ear actually helps problems. जैसे कि kidney stone, gallbladder stone, bladder inflammation है. So these points actually help in these different parts of the organs, even in allopathic way.
allopathic perspective or modern anatomy perspective. Right? So it is a multi-directional healing method. आप कोई भी एंगल से देखो ये काम करेगा. Whether you see in the TCM angle, whether you see in the modern anatomy physiology angle, it works. Okay. So this is a basic overview of what we have learned. Body parts on the ear. ठीक है. इसमें कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हो. Do you have any questions? Okay. Now, I think you can unmute this. If you have questions now, you can unmute this. सर आवाज ब्रेक हो रही थी. मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही थी. Okay. Okay, fine. I see if we have a good recording. So the last part which you told, it was not really clear. The voice was breaking that time. Okay, fine. I think the connection is the issue. I just said we have covered the ear part. Still now you and are having a corresponding body. cracked voice, sir. Okay. So I think that will be it. I think we should conclude today. Tomorrow I try to revise it. Is my voice audible now? Yeah. Otherwise we'll stop for today. Yes, sir, better now. Okay. Everyone can hear? Yes, sir. यस सर. So अभी हमने क्या देखा? कल हम इसको रिवाइज करेंगे. कल 3 o'clock we'll revise it quickly again with better pictures जो मेरे पास PPT में है. वो हम यूज करेंगे and we'll revise the ear anatomy with corresponding body parts. So किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं. Someone was asking about sound harmony. So after this I will be answering that. सर ये जो पॉइंट्स कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, द कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर, do they work for functional as well? If there is a functional problem in the related to the organ, Yes, would it work? yes, exactly. That is the idea. सर अगर जैसे हाई बीपी वाला प्रॉब्लम है तो if you just point at the heart, will it work? Will it bring down No. the BP? No, that is why the formulations are. One point, see, it will help definitely. It is not like it will not help, but will it help targeted? May not be. इसीलिए I will give an example. For example, the hard point. अगर हम आपने कल के या परसों के लेक्चर में देखा होगा, hard points is about joy and sadness and sleep. So if you just take hard point, it will not help for the person who is, I would say, depressed or having some issues psychologically. But if you take the hard point along with Shenman point, then it will work to reduce the excess energies or excess psychological things related to heart. Similarly, for high BP, if you take a hard point, it will not work alone. You have to have a combination. Oh, okay, sir.
Sir, Right. What please type? repeat about the mouth point, sir. Sorry. Mouth Sir, point. I didn't get you that time. It was voice was breaking that time. Okay. I will. Okay, I'll tell you about the mouth point. आप जो सवाल पूछ रही थी आप कंटिन्यू कर सकते हैं. सर ऐसे में मतलब ऐसा कोई जॉइन हार्ट विद दी शैनमैन पॉइंट तो वो एंजाइटी पे काम करेगा मगर ब्लड प्रेशर पे काम नहीं करेगा. नहीं, ब्लड प्रेशर के लिए ना देयर आर 2 or 3 डिफरेंट पॉइंट्स दैट हेल्प टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर. जैसे कि एंडोक्राइन में रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर नाम का एक पॉइंट है जो ट्रायंगुलर फोसा में होता है, वो काम करता है. सो करेक्ट कॉम्बिनेशन हेल्प्स. ओ Okay. About the mouth point, mouth is in 5 element charts आप देखेंगे तो mouth is a representation or earth element opens in mouth. So stomach and spleen are related to mouth and they are related to lips also. So whenever we apply the mouth point, it helps in stomach spleen conditions, whether it is TCM pattern or it is modern physiology. For both it works. So in terms of TCM patterns, it works to reduce the stomach heat, to reduce the stomach excess energy. So mouth point helps for stomach heat when we take a combination of mouth, stomach, occiput, sympathetic. 4-point combination. इसमें हम use करते हैं and that helps to reduce the stomach heat. And those who are asking about the sound harmony, it is a sound healing system. और उसमें एक स्टमक हीट का हीलिंग है जो थ्रू साउंड काम करता है. आपके स्मार्टफोन से जो साउंड निकलेंगे इस हीलिंग के सिस्टम के माध्यम से, दैट विल हेल्प योर ईयर पॉइंट्स और ईयर पैटर्न्स टू वर्क बेटर. ओके, वेयर इज द माउथ पॉइंट ना, मैं इसका एक फोटो ही भेजता हूँ. यहाँ पे दिखाना डिफिकल्ट होगा क्योंकि आई डोंट हैव अ परफेक्ट पिक्चर राइट ना, बट इन द इवनिंग व्हेन आई हैव माय इलेक्ट्रिसिटी बैक, मैं आपको इसके एक फोटो ग्रुप में भेजता हूँ. आई होप एवरीवन हियर इज इन द ग्रुप. ओके. सर एक चीज और है सर, आपने इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो बताया लेकिन व्हाट अबाउट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और द वेगस नर्व्स? Right. What is the question? There are of course points for both. But every time you have mentioned sympathetic only. No. See, the sympathetic point is not sympathetic nervous system. It is a balance of it. So sympathetic actually represents the vagus nerve. So that sympathetic point reduces the sympathetic activity, increases the parasympathetic activity, activates the vagus nerve. Oh, okay. Okay, thank you. That is why the point, its role is very important to learn. Okay, sir. I was hesitant to press it because I thought maybe it will ignite more of sympathetic systems and I would have like No. already BP अगर high हो तो और high हो जाएगा. No, not like that. Okay. Oh, okay. Thank you, sir. Thank you for the clarification. Yes. So I think we should stop for today because voice is breaking. I can't show the PPT. So tomorrow we'll have it covered and we'll continue. Is that okay? Okay, sir. Okay. Thank you so much. Good day, everyone. Thank you, sir.